The second tranche of e-auction has been launched. Thank you, and congratulations to each one of you for this launch. Now moving ahead, now I would request Honorable Union Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines Shri Pralhad Joshi ji for his keynote address. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें. Secretary Mines Sri Kantarao ji, Additional Secretary Sanjay Loa ji, Janardhan Prasad ji, Director General GSI, all other dignitaries and stakeholders who are present here, representatives of the media and friends. It is with a great pleasure and honor that I extend warm welcome to each one of you to this momentous occasion, making the launch of the second tranche of the auction of the critical and strategic minerals. As we have already released financial grants to the startups in the mineral sector, I congratulate them, and GSI's annual capacity building plan. The mineral and mining sector is the foundation for a nation's economy, and startups propel the economy forward. Today, at this moment, we are celebrating both how the government under Prime Minister Modi ji has not only transformed the mining sector but also created the culture of startup in the country. And value of the resources of these 18 blocks, estimated value of the resources is 30 lakh crores approximately, 30 lakh crore. तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. We started this process. Of course, इसका चर्चा बहुत दिन से हमने किया क्योंकि this is one of the major reforms. तो बरस डेढ़ बरस से हम बहुत इसका चिंतन मंथन हुआ, लेकिन ultimately we decided last year that a critical minerals का हमको कहीं भी शुरुआत करना है. तो इसीलिए पहले चर्चा क्या शुरू हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स कौन सा है. तो हमने क्रिटिकल मिनरल्स which are the critical for the country, that was not listed out, and first we did that, and ultimately we could able to make it 30, and 6 are not available in our country, and 24 we have decided to formulate a policy, and whatever needed amendments were to be done, that was taken up. उसके बाद हमने एक्ट अमेंडमेंट करने के लिए प्रोसेसिंग शुरू कर दिया, एंड अगस्त में 23 अगस्त we brought the amendment, and within 3 months we brought the rules. उसके लिए भी पब्लिक कंसल्टेशन सब कुछ होता है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन. ये मोदी गवर्नमेंट का स्केल और स्पीड दोनों का एक उदाहरण है. 3 महीने में ये पूरा करके, और हमने पहली ट्रांच में हमने किया था 20 किया था, और उसमें भी response is very good. Almost more than 180 people have purchased the document, and many people
many stakeholders are participating, and good response has come up for that also. And now within November we did that, and today we are launching the second tranche. And this second tranche, today the royalty rates have been approved more. आज सुबह हुआ था, तो जब हम डेट डिसाइड कर रहे थे हमारे बीच में चर्चा हुआ, तो रॉयल्टी रेट अगर डिसाइड नहीं होता है तो क्या करना। तो मैंने सेक्रेटरी साहब सब चर्चा करके डिसाइड किया, ये तो मोदी गवर्नमेंट हम बता देंगे कि हम लॉन्च का है, उसके पहले चाहिए। तो सेक्रेटरी ने उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक लेवल में काम किया और हमने पॉलिटिकल लेवल पे काम किया। आज हम लॉन्च करने से पहले अप्रूवल लेके आपके सामने है, ये हमारा स्केल एंड स्पीड है। हमने प्रधानमंत्री जी को भी बताया कि आज हम लॉन्च करने जा रहा है और इसका हमको अप्रूवल हम आपसे प्रार्थना करते कि हमको अप्रूवल चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वाज काइंड इनफ, immediately it was taken and today approval is given. So this is the how the government is functioning today, and we had promised you in the November, if I remember well and you also remember well, सेकेंड ट्रांच में बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट हम लागू करेंगे, हमने प्रॉमिस किया था। जो हमने प्रॉमिस किया है हमने करके दिखाया है। तो अभी आपका जिम्मेदारी है, 30 लाख करोड़ का ये वैल्यू है और 30 लाख करोड़ का वैल्यू का इसका उपयोग करना, आत्मनिर्भरता के तरफ जाना। इसके लिए अभी तो और 7-8 दिन में तो हम तो और डिफरेंट मोड में चले जाएंगे, लेकिन अधिकारी लोग काम करेंगे, आप चिंता मत करो। तो आगे इसमें हम लेके जाएंगे और हमारे थर्ड टर्म में जब हम आएंगे, आते ही हम तीसरा ट्रांच भी लॉन्च करेंगे। तो मोदी सरकार इसके थर्ड टर्म में लॉन्च करेंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ। अभी हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। तो टुडे विथ over 1 lakh startups in India has the world's third largest startup ecosystem. As we release the financial grants to startups, let me invite other players to the partner with one of the most important sector in the country, the mining sector. We promise to fulfill the support from the government, and as we all know, S&T Prism, which was launched in the November to fund the research and the innovation to the startups by MSMEs working in the field of mining and mineral sector. A total of 56 startups and MSMEs participated, out of which 5 have been selected. I am proud to highlight that along with the financial grant worth 7 crores, these selected startups will be provided the mentorship and incubation support and the technical advisory support during the entire project period. And as I said, we have also released the GSI annual capacity building plan. This plan under the mission Karmavegi will help the design, training capacity and building modules to overcome the competency gaps and meet the future demand. तो मैं आते ही मैं GSI का डायरेक्टर को पूछ रहा था, I was inquiring with him, आप नेक्स्ट ईयर हमारे थर्ड टर्म में आप कितना क्रिटिकल मिनरल्स का रिपोर्ट आप हमको देंगे। तो ही वॉज टेलिंग 300, लेकिन सेक्रेटरी थोड़ा इधर उधर बातचीत करके मुझे बताया हम 240 करेंगे। तो ही आप 240 कर दो, जो सेक्रेटरी बोला है इतना कर दो। 240 रिपोर्ट्स यू हैव टू गिव, एंड दोज 240 at the earliest. Kantarav is quite efficient and he has done excellent job. I am really appreciating him, and I am quite confident in the next term he will in the next entire year all the 240 whichever reports are given, they will be auctioned. तो PM साहब ने हमको टारगेट दिया था बिफोर 2025
we have to complete the auction of 500. So I think that will happen. We have already completed 368. है ना लोहिया जी, 368 हो गया है, and that will happen. So GSI कैपेसिटी बिल्डिंग यही है जी, और कुछ मुझे तो बाकी सब ये टेक्निकल चीज़ मैं क्यों जाऊँ, मेरा तो काम ही नहीं है वो. मुझे 240 रिपोर्ट्स नेक्स्ट ईयर के लिए चाहिए. हाँ जी, और बाकी उसके साथ सरफेशियल भी जो कुछ भी थोड़ा कर सकते हैं वो भी करिए. इसके साथ ही साथ हमारा जो आज के दिन में एम्पैनल्ड एजेंसी जो था एक्सप्लोरेशन के लिए, उसका संख्या भी बढ़ गया है. तो उसमें अभी 20 हो गया है. नाउ इट हैज़ बिकम 20. एंड ठीक है, बहुत कम है, 7 प्रोजेक्ट्स हमने दिया है, लेकिन शुरुआत तो हो गया है. इट हैज़ बीन बिगन एंड आई अर्ज द ऑफिसर्स एंड ऑल्सो यू पीपल दैट गिव द वर्क टू देम. तो उसमें और भी कुछ लिबरलाइज करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ करना है, तो हमारा एंटायर टीम, माई सेल्फ एंड आवर सेक्रेटरी एंड हिज टीम, वी आर रेडी टू कंसिडर इट. तो हमको क्या चाहिए, हमको इतना ये चाहिए कि एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो और आत्मनिर्भरता बढ़ जाए. दिस इज़ व्हाट इज़ द थिंकिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट. तो इसीलिए ये जो 20 एम्पैनलमेंट है, इन लोगों को हमको काम देना चाहिए. ये भी, इसका भी, ये जो हम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 3rd टर्म में हमारा इकोनॉमी 3री नंबर पर पहुंचना है, उसमें हमारा मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है. तो इसीलिए ये जो 20 लोग हैं, वी शुड शोकेस द सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस 20 एम्पैनल्ड एजेंसीज. क्योंकि नहीं तो अगर वो ठीक तरह से नहीं करते तो बाकी सब लोग आगे आते नहीं हैं. तो इसीलिए ये 20 एजेंसी को भी कैसे हम काम देना, तो उनका उपयोग कैसा होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन कैसे बढ़ना चाहिए, उसके लिए भी एक परफेक्ट प्लान बनाना चाहिए. और उनके साथ सेक्रेटरी साहब, मेरा एक निवेदन है, आप उन लोगों के साथ भी आप इंटरेक्शन करके व्हाट दे नीड, एंड समवेयर ऑल द 20 शुड गेट सम जॉब. ऑफ कोर्स कंपटीशन पर होता है, बट दे शुड गेट जॉब, सो दैट वी कैन एक सक्सेस स्टोरी हम खड़ा कर सकते हैं. Our goals are aligned with the requirements of the changing world, and we are committed to meet our international commitment under the Sustainable Development Goals. We also understand that critical minerals are poised to play the vital role in India's pursuit of the Sustainable Development Goals. Therefore, capacity building will also cater the evolving the demand from the mining sector to explore, develop, extract the critical and essential mineral repository responsibly. This brings us the historic moment of the day, the launch of the 2nd tranche. Today we are launching the 2nd tranche. I am happy to see the speed and the scale of the transformation of the mining sector. Let me give the latest example how quickly we are transforming the mineral and mining sector. The making of this day started on 24 July 2023, when the first time in the country our government identified and released the list of 30 critical minerals. In the monsoon session of the parliament in the August 2023, MMDR and OMDR acts were amended by the parliament and notified. कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट में बिल पास होता है, नोटिफाई नहीं होता है, नोटिफाई होने के बाद रूल्स फॉर्म नहीं होता है. ये सब मिला के आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट सेक्रेटरी एंड हिज टीम. 3 महीने में सब कुछ हमने कर दिया, विद इन 3 months. And then launch of 2nd tranche has happened in the 3 months of the first launch. Today in the morning, Union Cabinet chaired by Prime Minister Modi ji has approved the rationalization in the royalty rates of the critical minerals, and in less than 6 hours, we are here launching the 2nd tranche. मैंने पीएम साहब को भी आज बोल के आया, आप अभी पारित किया और शाम को हम इसका लॉन्च कर रहे हैं, और आज सर आप मीडिया में आज शाम को और कल सुबह इसका न्यूज़ आपके टीम के द्वारा देख सकते हैं. तो इतना तो, और पीएम वाज आल्सो वेरी हैप्पी, इतना हमने प्रिपेयर करके हम गए थे. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो वेरी हैप्पी ऑन दैट. टुडे द रैशनलाइजेशन of the royalty rates for the 24 critical minerals and strategic minerals
we have launched the second tranche of the critical minerals auction, and even though the union government has the responsibility of the auctioning of these blocks, revenue accruing due to auction and subsequent royalty payments, etc., will accrue to the states only. In fact, states are the biggest beneficiary of the mineral sector reform. Their earnings have grown manifold after 2020 amendment. Odisha, for example, has seen the growth of 860% in the earning. From 2015 to 16 to 2022 to 23, almost 8 years. In these 8 years, Chhattisgarh earnings have increased by 620%, Jharkhand by 425%, and Karnataka by 316%. The first tranche of auction witnessed the enthusiastic response from the bidders, reflecting the industry's recognition of the immense potential and the significance of these minerals. Building on this momentum, the launch of second tranche of presents an opportunity to the stakeholders to further contribute towards the India's economic growth and competitiveness. I commend the Ministry of Mines for meticulously finalizing a list of critical and strategic mineral blocks for the second tranche of the auction across the various states. A total 18 criticals and strategic mineral blocks are put up for the auction in this second tranche, out of which 17 mineral blocks are put up for the grant of composite license, 1 mineral blocks for the grant of mining lease. The minerals include graphite, glauconite, tungsten, vanadium, rare earth elements, nickel, potash, cobalt, phosphorite, PGE, etc. These mineral blocks are spread over across the 8 states of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Tamil Nadu. I would also like to highlight that after today, potash mining can start in India for the first time. तो हमारा जो उधर के बीकानेर में हमारा लॉ मंत्री और हमारा MOS पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री रहता है, वो तो बहुत पीछे पड़े थे. हमारे सेक्रेटरी साहब को भी वो स्वयं 3-4 बार बात किए थे, लोहिया जी से बात किए थे. I think after hearing this today, he should be very happy, and the entire people of Rajasthan should be also happy. And today we are beginning that. 2 potash blocks in Hanumangarh and Bikaner in the Rajasthan will further the vision the Atmanirbhar Bharat by checking the import of potash. We have been in constant touch with the industry regarding the taking initiatives to assure the Atmanirbhar in mining sector. Based on the industry feedback and the global best practices, we have revised the royalty rates. As you already know, the last year we introduced an exploration license for the deep-seated and critical minerals through amending MMDR Act. We also removed the certain mineral from the list of atomic minerals to expedite the auction from the critical mineral. So today, when I stand before you during the launch of this second tranche, I assure you the ease of royalty administration, I assure the fair revenue to the state, and to the potential investor, I assure attractive return on investment. This auction tranche may be the second tranche, but many of the minerals have been put up for the first time in India. We are confident that their indigenous mining would lead to the reduction of the imports and support the effort of making Atmanirbhar Bharat. These minerals are necessary for the technology-driven economy and energy transition of the country. Encouraging their mining would help in overcoming the supply chain vulnerabilities and dependency on the countries. India is a mineral-rich nation, and we do not want India to be left behind any developed country in terms of making use of mineral reserve. The mineral wealth of the nation should be used to improve and empower the lives of the citizen. Rationalization of the royalty would pave the way for more investors getting into auction for leasing the mines, thus leading the increased mining and the mineral processing.
This will further help in plugging the gaps in the supply chains of the critical minerals. The royalty rates have been kept at reasonable level to encourage the more participation in the auction. So we have heard and acted as per your feedback. Our intent is visible in our actions. Now I request you, the industry, to participate in this auction. The auction of the critical mineral presents a win-win opportunity for the stakeholders involved, from the job creation and the revenue generation for the local communities and indigenous peoples, for fostering innovation and collaboration among the industry, academia and the government. This development will strengthen our strategic partnership with the allies and trading the partnership, while helping us to achieve our climate goals through deployment of the clean energy technology. As I said, we are committed to enhancing the ease of doing business in mining sector. We are implementing the reforms to make mineral mining more attractive, boost the production and exploration in the country. Before I conclude, I would also like to mention that एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का जो रिजीम शुरू होने के बाद लास्ट मंथ वी हैव हैंडेड ओवर अराउंड 20 blocks to the state. 5 states are ready to auction within next or 15 or 20 days. तो जो हमने शुरू किया है, जो एक्सप्लोरेशन का रिजीम, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, पहले हम कंपोजिट लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस देते थे, तो बाद में एक्ट में अमेंड करके हमने जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का रिजीम शुरू किया है, कम से कम 5 states they will auction at the earliest, and we are also doing follow-up. And during the last mining ministry conference also, many states, they have assured us that as soon as we got the report, we will go for the auction. These are the changes. And once again, before I could conclude, I will tell you, any suggestion which is win-win opportunity should be there for both for the investor and the, as far as the revenue of the government is concerned, we are open for any suggestion. Modi government is open for any suggestion, so that we should become आत्मनिर्भर. तो हमको जो भी हमारे पास है, जो भी मिनरल हमारे पास है, उसका इंपोर्ट बंद होना चाहिए. ये तो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आग्रह पूर्वक हमको सोचना है. तो इसीलिए तो जब भी हम रॉयल्टी रेट भी हम 2%, 3%, 1% इतना रॉयल्टी रखा है. द रीज़न इज ओनली दैट वी शुड, तो हम थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू लेने का चक्कर में हमको इंपोर्ट करने का नौबत नहीं आना चाहिए. ये सोच हमारा स्पष्ट है. तो फिर भी इसमें कुछ चेंज करना, आगे भी कुछ आपका सजेशन है, गवर्नमेंट इज ओपन फॉर दैट, बट द इंटेंशन इज टू स्टॉप द इंपोर्ट. विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड सब इसमें पार्टिसिपेट करिए. जो ऑक्शन अभी शुरू हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन करिए. और जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स के लिए भी मेरा शुभकामना है. और भी आगे हम सपोर्ट करते रहेंगे. और जीएसआई का जो हमने टारगेट अभी फिक्स किया है, ये मान लो ये भाषण नहीं है, ये टारगेट का मीटिंग ही है, इसे मान के चलो. और तो इतना तो करना ही चाहिए. विद दीज वर्ड्स वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, एंड आई ऑल्सो थैंक आवर मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी एंड हिज एंटायर टीम. धन्यवाद. नमस्कार.